Good evening. So let's begin with the today's topic. Today's topic, we are starting with the statistics. So statistics is also one of the basically module in your syllabus. As we already discussed in the last class that we completed a one major syllabus, a major module that is a sequel for the data analytics, and we understand a basic fundamental of data analytics. I just get into the main core crunch of the data analytics, what exactly the data analytics and what are the steps and processes involved into the data analytics in the last session. With the many examples we had already discussed about data analytics in the last session. So I hope like you are having very clear idea in your mind that what is data analytics and who are the data analysts and what are their roles and responsibility. I hope it is clear to everyone. Garvita. Yeah. Yes, ma'am. Okay, fine. Then there is a next topic that is statistics. Statistics is one of the basically area, or we can say the branch of a mathematics only that is mainly deal with the data. Okay, and as we are as we are into the data analytics, so it's very important. Like being a data analyst, we should know the basic core idea about the statistics because at the end of the day whatever be the data we are having, we will be technically applying the statistics approach only to make it analytics on it, okay, or make the analysis on it, okay. So statistics is one of the major concern, or we can say not concern, a major area. Being a data analyst, always look into it, okay. So without statistics, we cannot get into the data analytics. I hope it is clear. Yes, ma'am. So we already started little bit about the statistics in the last session, but today we are going to understand what exactly the statistics, what are the different types of statistics used for a data analytics. ये सारी चीजें हम data analytics के reference में ही बात करेंगे. See, try to understand. Statistics एक बहुत vast topic है. लोग MSc और PhD करते हैं statistics में. हमको वो नहीं करना है. हमको इतना in detail नहीं जाना है statistics में. Because that's a complete different what I say the branch, okay. We will be just using statistics approach जो हमारे data analytics में काम आती है. तो हमको just being a data scientist और data analyst, I would say personally कि data analyst को क्या क्या statistical चीजें पता होनी चाहिए for a data analytics that we are going to cover in this topic. I hope it's clear to everyone. Yes, ma'am. So basically, why need to understand statistics? Because as we know that the statistics is a branch of maths, okay? And when it comes to stats, it is directly coming along with the data, okay? मतलब जब हम statistics की बात करते हैं तो वो statistics data पे ही apply होता है. So here we are dealing, being a data analyst or in the analysis, we are mainly dealing with the collections, analysis, identifying the patterns, right? We are also making some presentation. Okay. So all these things we need to do as a part of data analytics. So for such kind of activity, we internally, or we can say the approach will be always statistical approach, okay, because in the data analytics statistics is used to derive the insights, okay, and the knowledge from the data. And what exactly we are looking for, मतलब हम data analysis क्यों करेंगे, इसी के लिए तो करेंगे ना कि हमको उस data के अंदर क्या है, ओके, और वो जो जो कुछ भी है, मतलब जो हमको बीइंग एनालिस्ट समझ में आ रहा है, उस नॉलेज को हम अंडरस्टैंड करके किसी भी बिजनेस के डिसीजन को इजी या क्लियर बनाने के लिए हम अप्रोच है. दिस इज ओनली द डेटा एनालिटिक्स. इन द लास्ट क्लास ओनली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस, राइट? Yes, ma'am. Now, in the continuation with the concept, today we are going to discuss about statistics. Okay, so just allow me to share my screen. Okay, so I hope my screen is visible to everyone.
Yes, ma'am. Fine. So what exactly we are going to talk here? Statistics is, as I told you, it's a branch of basically maths. Here I had basically put it some more technical definition. Okay. Ki statistics is nothing as a science-based numerical facts and figure. The study of statistics involved into the maths and relies upon certain calculation of numbers. So obvious ही बात है, जब हम कोई भी चीज को एनालिसिस करेंगे, मतलब हम जब डेटा को एनालिसिस करेंगे, तो सिंपल डेटा को हम एनालाइज कर ही नहीं सकते unless and until if you don't have any relevant numeric basically factor or a parameter associated, right? तो वो न्यूमरिक पैरामीटर जब तक हमको मिलेगा नहीं, तब तक हम कोई भी चीज का एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं. एंड द सेम थिंग एसोसिएटेड विद द स्टैटिस्टिक्स, मतलब जब स्टैटिस्टिक्स रहेगा तो ऑटोमेटिकली इट कम्स अलोंग विद द मैथ्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड द फिगर. ओके. स्टैटिस्टिकल इज एनालिसिस प्रोसेस, मतलब ये एक प्रोसेस है, मतलब इट्स एनालिसिस. स्टैटिस्टिक्स भी क्या है? इट्स एनालिटिकल प्रोसेस ओनली. अब ये स्टैटिस्टिक्स कहीं पे भी यूज हो सकता है. ओके. सो इट इज बीइंग यूज्ड इनटू वेरियस फील्ड्स लाइक इंक्लूडिंग बिजनेस, इकोनॉमी, social sciences, health sciences, engineering, so and so forth. Everywhere the data is there, the statistics we can use it. Similarly, everywhere the data is there, the analysis is possible, right? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डेटा एनालिटिक्स हम करते हैं वो हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जो अप्रोच रहता है वो हमारा हमेशा स्टैटिस्टिकल अप्रोच रहता है. ओके. Now, in today's topic, what exactly we are covering? Okay, so we are going to cover what is statistics, why statistics, terms used in the statistics, statistical basic concept which are going to use for the data analytics, and how the statistics is purely related with the data analytics. मतलब उनके बीच का relation हम देखेंगे. Is this clear to everyone what we are going to discuss today? Yes, ma'am. Fine. So let's begin. Now, what is statistics? So basically, as I told you in the definition wise, that statistics is nothing, is a science based on the numerical facts. Numerical facts मतलब जो number वाली values होती है. So number can be any number, right? It can be fractional, it can be whole, it can be real, it can be imaginary, it can be decimal number, any kind of number. Numeric value मतलब कोई भी number. And the figures. Figures मतलब एक उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू होना चाहिए. लेट्स से एग्जांपल, आई जस्ट शो यू हियर इटसेल्फ. ओके. सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी राइट लिखा है. यहाँ पे आई हैड रिटन 1 2 3. I hope my screen is visible and what I am doing, it is also you are able to see, right? अब ये जो 1 2 3 है, आप कह सकते हो इट्स अ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. ओके, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जब तक किसी फैक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है. से फॉर एग्जांपल, इफ आई जस्ट 1 2 3 इज माय रोल नंबर, then this is become your numerical facts and figure. Are you clear with this? सिर्फ नंबर लिखे रहेंगे तो आप किस चीज का एनालिसिस करोगे, राइट? या सिर्फ रोल नंबर ऐसे पूरे लाइन से लिखे रहेंगे और उसके सामने वैल्यू नहीं रहेगी, तो हाउ यू कैन डू द एनालिसिस, राइट? जब तक ये दोनों कॉम्बिनेशन मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर नहीं रहेंगे, तब तक आप स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई नहीं कर सकते. एट द सेम टाइम यू कैन नॉट गो फॉर द एनालिटिक्स. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now, statistics is mainly basically nothing. It's a calculation of numbers. Okay. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर हम किसी चीज को वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं या वेदर के लिए हम डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं. सो वेदर वी विल बी कलेक्टिंग वेदर लाइक whole the year. We will collecting the weather. Basically we will target a particular zone, right? जब तक मतलब जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं कि अगर हम स्पेसिफिक जोन एक सेगमेंट लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट उठाया या पर्टिकुलर इंडिया या ज्योग्राफिकल कोई भी लोकेशन हमने उठाया, एशिया उठाया, सो दैट एशिया इज वन. ओके. अंडर दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग की साल के इतने दिन, या फॉर पर्टिकुलरली if we just targeting about certain raining, basically rain or what I say certain particular season, okay, जिसका वेदर के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं. तो अगर हम
समर को लेके कर रहे हैं, तो वी विल बी एनालाइजिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड विद द सर्टन रिस्पेक्टिव वैल्यूज की जनवरी मंथ या फरवरी मंथ या जनवरी से लेके मई तक का या अप्रैल से लेके जून तक का. So we will be take certain basically facts associated with it, okay, and then we will be calculating कि उसका averagely temperature कितना जा रहा है, बिलो मिनिमम टेम्परेचर कितना है, एवरेज टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिड कितना है, क्लियरिटी ऑफ बेसिकली विजन कितना रहेगा, हाउ मच एयर पोल्यूशन इज कंट्रीब्यूटेड. सो ये सारी चीजें जब मिलके आएगी तभी जाके हम किसी पर्टिकुलरली उस डेटा सेट को कलेक्ट करके हम एनालिसिस कर सकते हैं. कि एक सिंपल एग्जांपल अगर हमने लिया कि लाइक इन द दिल्ली, अगर हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं लाइक इन द पीरियड ऑफ लाइक दिस पीरियड, और वी कैन से during this time or maybe during say winter time, why the clarity is not there in Delhi, because of the atmosphere, because of the weather, because of certain other situations. So ये सारा एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक फैक्ट्स रहेंगे, उसके एसोसिएटेड वैल्यूज रहेंगी, राइट? Are you understanding this, what I am taking the examples and explaining you? Yes, ma'am. Okay, so basically, the main part here is the facts and the numerical value associated with those facts. Okay, and the same thing, जब तक हमारे पास ये नहीं रहेंगे ना हम एनालिसिस कर सकते हैं. और एनालिसिस इज नथिंग, इज यूर अप्लाइंग द स्टैटिस्टिक्स. अब ये स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कैसे करते हैं? हम करते तो एनालिसिस ही है, लेकिन बीइंग अ एनालिस्ट हम बैक ऑफ माइंड हम अप्रोच क्या लगाते हैं? So there are two approaches given in the statistics. Okay, the very first is descriptive one and the second is inferential one. So can anybody explain me what do you mean by descriptive one? Man, descriptive, I guess, is mainly like, for example, the mean, mode, median, like how we calculate it using Right. different methods. That is descriptive. And ma'am, like in inferential statistics, there comes like creating hypothesis, and inference means a result. So basically, creating hypothesis using the test and coming to a final result. So that's inferential. Exactly. So, in other words, see, you had given me the example. मतलब आपने मुझे statistical measures के example दिए while explaining कि descriptive मतलब mean mode median या inferential मतलब आप hypothesis set करोगे, you will test those hypotheses and you come and land with certain basically conclusions. So that is your example of that measures. मतलब ये methods कौन सी रहती है, आपने वो मुझे दिया. लेकिन आई वॉन्ट द एक्सप्लेनेटरी, बेसिकली एक्सप्लेनेशन. आई वॉन्ट अ एक्सप्लेनेशन व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव. इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे. हम बोलते हैं ना डिस्क्राइब करो, लाइक वी से ना, लाइक डिस्क्राइब दिस टर्म, डिस्क्राइब दैट. हम क्वेश्चंस जब अगर आपने कभी देखा होगा कहीं, मतलब लाइक इन योर एग्जाम्स आल्सो यू विल फाइंड दोस क्वेश्चंस कि डिस्क्राइब समथिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस, डिस्क्राइब समथिंग. what do you understand by that word describe? Because that describe word is related to descriptive only. मैम जो डेटा सेट्स होते हैं हमारे, मतलब उसको समराइज करना थ्रू मीन मीडियन मोड, तो उसकी पूरी जैसे एक प्रॉपर डेटा है हमारे पास, उसको हम लोग प्रॉपर समरी के तरह से पूरा, मतलब क्योंकि डेटा क्लीन करते हैं फिर सारे हम उस पे इक्वेशंस लगाते हैं और उसको एक समरी फॉर्म में बनाते हैं, तभी तो हम लोग एनालाइज कर पाएंगे ना ट्रेंड्स हैं क्या हमारे. तो डिस्क्राइब इस सेंस में मे भी हम लोग करते हैं. Exactly. So you mean to say summarize. Describe descriptive statistics is यस nothing. यस मैम. It is an approach of summarizing. Okay. It is an approach of describing a data set. Okay. So data set can be any data set, you can have it. So basically, descriptive statistics is completely based on your summarization, or maybe we can call it a describe approach. Okay. So it provides the information on the basically व्हाट आई से कि किस तरीके से डेटा है हमारे पास. एक सिंपल एग्जांपल अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का लेते हैं, तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ माय स्टूडेंट्स, सो दिस इज माय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. एवरेज ये मेथड अप्लाई करूंगी, लेकिन डिस्क्राइब किया है कि एक क्लास है,
जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स मुझे एनालाइज करना है। आप समझ रहे हो चीजों को क्या बोल रही हूँ मैं? यस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या हो रहा है इस डिस्क्रिप्टिव का मतलब? यस मैम। मतलब ऑलरेडी डिस्क्राइब की हुई चीज है, हमारे सामने डेटा सेट है, डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया कि आई वांट टू कैलकुलेट और आई वांट टू एनालाइज माय स्टूडेंट मार्क्स। अगर मेरा ये टारगेट है या ये मेरा एक एनालिसिस करने का एक छोटा सा मेरे पास असाइनमेंट है, सो द डिस्क्रिप्शन इज ऑलरेडी देयर इन माय क्वेश्चन कि क्लास है, स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स है, और उनको हम फिर उन मार्क्स के ऊपर हम एनालिसिस अप्लाई करेंगे या स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। सो दैट इज आवर डिस्क्रिप्टिव। गॉट इट? And this is the most commonly used or method or measure. Descriptive statistics is most commonly statistical measures. Measures matlab different approaches. Okay, so as somebody had already given the example, mean, mode, median, variance, range, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें क्या आती है? डिस्क्रिप्टिव में आती है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? ऑलरेडी आपके पास पूरे डेटा की कहानी है, पूरा बैकग्राउंड है, और आपको उसके ऊपर अंदाज लेके अप्रोच मतलब उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके आपको उसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव मीन्स? Yes, ma'am. Now, what is inferential? Ma'am, to find a conclusion. Exactly. Inferential means what? Inferences. Okay. मतलब एक सिंपल सा चीज है. What is in basically inference? मतलब एक कीवर्ड अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, inference मतलब क्या? हम किसी चीज का कंक्लूजन निकालते हैं. Inference मतलब सिमिलरली यहाँ पे भी inferential statistics is completely related with the conclusion. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अगर हमको किसी चीज का इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो क्या ले सकते हैं? कैन यू जस्ट गिव मी एनी एग्जांपल, और एल्स आई कैन गिव यू द एग्जांपल. कैन एनीवन able to give the example for inference? Like inference in like statistics. हाँ, मतलब स्टैटिस्टिक्स में लोग कहीं पे भी, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे इन्फ्रेंस के लिए I'm चाहिए. like basically what happens in statistical inference is like for example null hypothesis हम कुछ देते हैं कि this value is equal to this value and हमारी alternative दो hypothesis होती हैं, null and alternative, and the alternative hypothesis becomes कि no, this value is not equal to this value. Then ma'am we conduct some tests and like whatever the test results come उसके basis पे like obviously there are some conditions and like on the basis of that we like see whether to accept the null hypothesis matlab ki to make to confirm that this value is equal to that value or like to reject the null hypothesis, which means okay these two values are not equal to each other. एग्जैक्टली exactly. अगर उसका एक और हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे पर्टिकुलरली, अगर जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले कि रेनिंग सीजन है, लाइक सी इट्स ऑलरेडी ओवर द रेनिंग सीजन, मतलब हमारा अभी ये जो मॉनसून सीजन था दैट्स ऑलरेडी गेटिंग ओवर. ओके, बट अगर मुझे उसके ऊपर एक प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर बीइंग अ अम्ब्रेला वेंडर, ओके, या मैं अम्ब्रेला सेलर हूँ, तो मुझे कितना स्टॉक करके रखना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक्स आई विल डू, whether I am go with a descriptive one or an inferencing one. I'm just asking approach. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अभी फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, लाइक वी आर हैविंग दुर्गा पूजा, दशहरा है, फिर वी आर हैविंग दिवाली एंड क्रिसमस. ऑल दीज आर द कंटिन्यूएशन सीजन्स आर कमिंग, राइट? दीज आर ऑल फेस्टिव सीजन्स. तो आप अगर देखोगे, लाइक इफ यू जस्ट विजिट एनी मॉल और एनी बेसिकली मार्केट नियर बाय यू, you will find a very good clothes, the fresh stock in the shops, fresh stock into the showrooms also. How they basically decide? मैम
इन्होंने मतलब प्रिडिक्ट करा ना कि अभी फेस्टिवल सीजन आएंगे तो क्लोथ्स हमारे बिकेंगे, इन स्टॉक्स हमारे, बस Exactly. So that is प्रिडिक्शन basically लगाया उन्होंने। that is basically the inference only, that a prediction or some conclusion. कि भाई अगर दिवाली है तो that like in the India people normally almost every family they buy some new clothes. Okay. In India, this is only the culture we are having, right? So like because Diwali is the biggest festival for us, so we always prefer to buy some new clothes. So that is kind of basically prediction or a conclusion we will be having. So such kind of data or such kind of analysis is nothing. It's your inferential statistics. मतलब ये कि अगर जैसे एक नया ट्रेंड है recently, like you might be like aware about it, एक certain trend आता है, like for based on that trend we basically in the shops you will find a similar kind of trendy clothes. Okay, so वो trend कितने दिन का maintain करना है, whether it is for the only festive season or whether it is for the longer duration. तो ये सारी चीजों का एनालिसिस करके ही जो मार्केट में आपको कपड़े या मॉल्स में आपको कपड़े दिखते हैं वो उतने ही स्टॉक का दिखता है। अगर आप बाद में लेने भी जाओगे तो यू विल नॉट गेट दो स्टॉक, और एल्स इफ यू जस्ट लुक अराउंड कि आपको 6 महीने बाद वो आपको ऑफर में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो चुके रहेंगे। सो सच काइंड ऑफ बेसिकली एनालिसिस is always done under the inferential statistics, जहां पे हम probability निकालते हैं, what are the predictions based on something. Okay, and they are completely based on certain relationship between the variables. Simple. दिवाली आने वाली है इसलिए मार्केट पूरा भरा हुआ है। ओके, शादियां आने वाली है इसलिए मार्केट पूरा भरा हुआ है, या क्रिसमस आर नियर बाय, market is completely full of that. So such kind of ways, in fact, अगर आप even if I don't know like whether like you are aware or not, but in like Pune there are few shops, sweet vendor, I'm just talking about sweet mart. Okay, मिठाई की दुकान की बात कर रही हूँ. So there are certain standard brands here. Okay, and those brands, वो ब्रांड का एक केस स्टडी है कि उनका जैसे 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के रिजल्ट जब डिक्लेयर होते हैं तो उनका प्रोडक्शन ऑफ पेड़ आज वो बढ़ा देते हैं, बिकॉज नॉर्मली पीपल लाइक जैसे जिनका 10th बोर्ड का रिजल्ट है, जैसे हम मान लो एक सिंपल एग्जांपल कि 2 मई को 10th मई का रिजल्ट लगता है एवरेजली, जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, तो 1 से लेके 4 मई तक उनके शॉप पे आप ज्यादा पेड़े देखोगे। व्हाई? बिकॉज पीपल टेंड टू बाय दिस। दैट इज काइंड ऑफ inferential statistics they are applying. Are you clear with this what I am trying to say? Yes, ma'am. Now, why statistics? Okay, why statistics is very important here, because statistics are useful in many fields. मतलब I यहाँ पे मैंने लिखा है, I would say in all fields. Okay, including the majorly the businesses. Okay, and when it comes to data analytics, we are directly closely working in the under the business house. So that's why statistics is playing very vital role into the data analytics. So each and every organization aspires to the data driven. हर organization चाह रहा है कि मेरे पास जो भी डेटा है उस डेटा को मैं कहीं ना कहीं अच्छे से यूज करके मेरे बिजनेस को बढ़ाऊं. दिस इज व्हाट देयर मेन ऑब्जेक्टिव, right? And those objective we are fulfilling being a data analyst, right? तो अगर हमको statistics पता है, अगर हमको उसको अप्रोच उनकी अप्रोच अप्लाई करना पता है, तो उसका जो डेटा है किसी भी मतलब एक फार्मा कंपनी हो गया या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया या कोई भी हो गया, आप उसके लिए एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए या उसको उसका बेस्ट डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर सकते हो, राइट? Are you clear with this? So basically अगर हम देखें statistics, why statistics is important? Because it summarizes, it describes the data, right? Then it's identify the pattern, trends and relationship between the data. मतलब statistics से ही ये सब चीजें होती है, और ये चीजें क्या है, ये data analytics की तो पार्ट है ना. आप भूल जाते हो कि सब कुछ 4 दिन में, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी जब हमने डेटा एनालिटिक्स की बात करी थी. और उन सब चीजों को मतलब हमको चाहिए रहेगा वो सब चीजें, बिकॉज
वी आर गोइंग टू डू डेटा एनालिटिक्स, राइट? सो उस एनालिसिस के लिए कौन हेल्प करेगा? विच फील्ड इज गोइंग टू हेल्प? विच ब्रांच इज गोइंग टू हेल्प? द स्टैटिस्टिक्स इज गोइंग टू हेल्प। टेल मी, आपको कॉमर्स की फील्ड हेल्प करेगी? आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करेगा क्या? नहीं। आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा क्या? नहीं। आपको क्या हेल्प करेगा? विच फील्ड इज गोइंग टू हेल्प यू आउट? Statistics, because statistics is purely related with the data, facts and figure. Are you clear with this? Yes, ma'am. Now, if I just ask you, और क्या क्या चीजें, मतलब स्टैटिस्टिक्स से हम डेटा एनालिटिक्स के लिए हम रिलेट कर सकते हैं? See, summarization is possible, description of data is possible, उसके अंदर के पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोडिक्शन निकाल सकते हैं, वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन, वी कैन ऑल्सो बेसिकली सिलेक्ट सर्टन सैंपल डेटा, है ना? तो ये सारी चीजें जो है, दैट इज ऑल इज अ पार्ट ऑफ योर statistics, and that is all your part of your data analytics. Yeah, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Now mainly terms जो यूज होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स है वो किस तरीके से यूज होगा, और जो हमारे डेटा एनालिटिक्स में यूज होने वाले हैं सेम उसी के लिए वो भी टर्म्स हम बात करेंगे. सो जो टर्म्स नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं वो वेरिएबल है. ओके, पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन मतलब क्या? हमारा डेटा सेट. ओके, जो हम डेटा सेट बोलते हैं ना हमारे डेटा एनालिटिक्स में, दैट इज योर पॉपुलेशन हियर. I hope whatever I am just writing on the screen that you are able to see, right? आप लोग आज क्या बात है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है फटाफट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? Ma'am, Yeah. ma'am, you mean population whole data set? I mean the population is nothing. Yeah, the population, जैसे हम किसी भी चीज का मतलब, जैसे population is a generic one. Okay. अब उसमें से जब हम कोई एक्सट्रैक्शन निकालेंगे उसको बोलेंगे सैंपल. ओके, सो ये जो दोनों चीजें हैं वो हमारे डेटा सेट को रेफर करती है. ओके, सो सैंपल इज डायरेक्टली नथिंग इज योर डेटा सेट. समटाइम पॉपुलेशन इज इटसेल्फ अ डेटा सेट. अंडरस्टूड? Okay, ma'am. ओके, सो पॉपुलेशन एंड सैंपल. सैंपल मतलब अब जैसे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ह्यूज है. लेट्स से अगर मैंने एक एनालिसिस किया कि हाउ मेनी vegetarian, okay, in India. Just take an example, okay. How many people who are vegetarian? I'm talking about just vegetarian, not vegan, okay. I'm just talking about a vegetarian. How many people are vegetarian in India? So अगर मुझे एक रफली, अगर हम 135 करोड़ है, तो अगर मुझे रफली उसमें से जस्ट टेक अ हाफ ऑफ इट, अगर हम एक रफली उसमें से हाफ लेते हैं, तो अगर 70 करोड़ लोग अगर मान लो कि दे आर वेजिटेरियन, एंड नाउ आई हैव टू एनालाइज हाउ मेनी ऑफ आर द वेगन, ओके, हाउ मेनी आर ईटिंग ग्रीन वेजीज ओनली. तो ये सारा जो पॉपुलेशन है, इट्स अ वेरी बिग पॉपुलेशन. आई कैन नॉट इन्फ्रेंस एनीथिंग. ओके, तो मैं एक सैंपल कलेक्ट करूंगी. सैंपल कलेक्ट करना मतलब क्या? एक रिलेवेंट सा उसमें से मैं एक पार्ट ऑफ इट निकालूंगी. मतलब मैं कोई 70 करोड़ का डेटा इकट्ठा नहीं करूंगी. मैं उसमें से आई विल टारगेट 70 लाख और आई विल टारगेट 70,000 एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आर यू क्लियर विद दैट? Yes, ma'am. Sample में से to represent entire population.
Exactly. And then I will collect it my data set and then I will start analysis on it. And जब मैं analysis start करूंगी तो उसमें हम statistical parameters add करेंगे, कितने females है कितने male है, तो मैं दोनों को बराबर लूंगी, right? अगर मान लो कि मैं like if I just working on 70,000 basically vegetarian persons, okay, तो मैं उसमें क्या करूंगी कि 35,000 जो रहेंगे वो मेरे मेल रहेंगे और 35,000 मेरे फीमेल रहेंगे, तो ही तो वो एक मतलब अनबायस्ड एनालिसिस होगा ना। Yes, ma'am. अगर मैं एक रैंडमली उठा लूंगी और बाद में मुझे मुझे पता चलता है अरे इसमें सबसे ज्यादा मेल ही थे, मतलब मेरा डेटा सेट ही प्रॉपर नहीं था, राइट? सो आई कैन नॉट टेक अ इन्फ्लुएंस कि इंडिया में ज्यादा मेल वेजिटेरियन है, आई कैन नॉट से दिस, राइट? इसका कंक्लूजन ये निकल के आएगा एंड विच इज नॉट ट्रू, Yes, ओके? ma'am. Yes, ma'am. Such kind of situation not happened. So the sampling of the data is very clearly and properly maintained. Okay, and once my sample is ready, matlab data set is being ready, then I will be going forward for the analysis. Then I will be going forward for the statistical methods on it. फिर उसमें मैं average निकाल सकती हूँ. I will find out the average age of the female who are vegetarian, average male age, how many kids are there below 18, how many adults are there between 18 to 35. इस तरीके का सारा एनालिसिस मैं कब कर सकती हूँ? जब मेरे पास एक सर्टन सैंपल रहेगा मतलब एक डेटा सेट रहेगा. Are you understanding? Are you able to imagine what type of things we are discussing here Yes, today? ma'am. Okay, then what major statistical concept we will be applying here in the data analytics? So what are the major basically statistical concept we will be applying? So the very first is correlation. That is the most important thing. What do you mean by correlation? Ma'am, Ma'am, basically, relationship between two correlation is variables. relation between two variables, and like there is positive correlation and negative correlation. Like positive correlation is like, for example, if the one variable is increasing and the other variable is also increasing, and ma'am, like for example, negative correlation is like one variable is increasing whereas the other variable is decreasing with time. Okay. Can you give me any realistic example or real world scenario example? Ma'am, the one of the most basic examples is like age and time. So as the time increases, the age also increases. So this is a positive correlation between age and time. And Okay. ma'am, yes, ma'am. And like for example, if there is a correlation between the calories consumed and weight. So like ma'am, as the number of calories increase, the weight also increases. So that is also a positive correlation. Okay, and what is negative? Can you just frame any negative, basically example? Ma'am, like one of the basic like is like, for example, a person is studying for his exams. So like the more time he gives to his studies, his course, his like the syllabus for him to study becomes less. So ma'am, like with increase of time involved in studying, the syllabus remaining is less. So ma'am, we can say that this is a negative correlation. No, no, no. This example cannot suit for the negative correlation. I will take your example only. If the age increases, the flexibility of your bones and muscles decreases. Agree? Yes, ma'am. So this can be a negative. अगर strength पूछोगे कि a simple example, for example, like you are in the age of like 18 to 20, 21, जो भी आपकी age रहेगी randomly. So your flexibility, your mobility, your muscle strength is definitely different than mine because my age is 36, right? So in that case, if I just compare कि आपका age और आपका muscles and strength in your bones and other thing is completely different than mine. Okay, altogether we both are in the basically parameter of the age, right? Are you understanding this? अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने एक ऐसा स्केल ड्रॉ किया,
ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, यहाँ पे मेरा एज है, यहाँ पे मेरा एज है. I started with the 0. I am having 10, 20, 30, 40, let's say 50, 60, और एक एवरेज एज हमने यहाँ पे 70 लेके रखा हुआ है. ओके, अगर हम 80 लेते तो भी चलेगा. y एक्सिस पे अगर मैं, ये एज है, दिस इज माय एज हियर. ओके, then I want to define the basically strength, or maybe the muscle strength, or I want to define the BMI. Okay, so what is that? Body mass ratio basically. Okay, so if I just have a BMI, और BMI ना लेते हुए हम कुछ और लेते हैं, लाइक वी विल बी टेकिंग अ स्ट्रेंथ ओनली. सो एक सर्टन हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं, so if that strength also ranges from, say for example, how we will be define it, can you just tell me? Ma'am, what? I am asking the strength. Ma'am, like with age, strength decreases, right? So Right. it becomes negative correlation. Yeah, but how we will be declare here? Okay, so like suppose for example, if there is a muscle strength, okay, और या हम muscle strength ना लेते हुए ऐसे लेते हैं, what I say, one second. Okay, flexibility. Okay, if I just take a flexibility here, okay, body flexibility, एक simple flexibility लेते हैं, तो यहाँ पे if the flexibility is, say for example, flexibility is say 100%, then say 90%. How you will draw this? I just want everybody should draw on the paper about this. कैसा ग्राफ आएगा वो चाहिए मुझे. I hope you everybody knows how to draw graph. Ma'am, I guess it would be like there would be a slanting line which हाँ. will start from the y-axis, and like it will slowly, like it will gradually come to 80, like it will be falling like this, like it will form a triangle with the x and y axis. Right. But have you tried, or have you drawn on the paper, or you just telling me by your Like understanding? I'm pursuing a course in data science and stats, so that's why like I have studied this. Oh yeah, so you will find that this kind of basically, suppose अगर कोई 80 का बंदा है तो उसका जो basically flexibility रहेगा वो somewhere in between 10 to 20, 30 जो भी रहेगा. 70 के बंदे का भी ऐसे ही कुछ यहाँ पे somewhere it is being ranges. 60. I'll start from this. Okay, I'll just starting with the reverse one. So जो 10 साल का बच्चा रहेगा वो तो 100% flexible रहेगा. जो 20 साल का रहेगा वो maybe not 100, maybe in towards 90, 95 के बीच में. Then 30 वाला भी 90 तक आएगा. 40 वाला 80 तक. Like that it will be. Are you understanding what I'm trying to say here? So such kind of basically line I will get it. So the person who is 80 years old, his age and body flexibility will be in between this kind of way. So ये जो मेरा blue line है, I'll just change the color here, so it will be easy to understand and explain you. So ये मेरा जो line रहेगा, this line, okay, and this will be represent
the age at this point is nothing. It's a point where they will have value कि जो बंदा है, जो X value है, वो है age 80 और उसकी body flexibility है 10%. Is this clear to you, everyone? Yes, ma'am. Okay. Now coming to the next, that is regression. What do you mean by regression? आज सब लोग क्या डिसाइड करके बैठे हैं क्या कि आंसर नहीं देना? हाँ, मैम मुझे आता नहीं है रिग्रेशन के बारे में कुछ, इसीलिए। okay. What else? Who is knowing? Ma'am, basically, like, I guess regression is a method which, like, helps us to understand the relationship between two independent variables. Sorry, one independent and one dependent variable. ऐसे जरूरी नहीं है. Can you just give me any example of regression? Ma'am, how about age and height? Age and height can be described as a linear, basically regression. Yes, Okay. ma'am. Because like with increase in age, the height also increases. So linear. आगे. Ma'am, careless driving and the number of accidents. Possible. Can you just give me some example which is more over business or organization oriented? Ma'am, like, can we say like number of stocks bought and the total profit? Or for example, let's say the total quantity in a shop and the total profit that it has, maybe. ऐसा ना लेते हुए हम और थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं कि कितना पैसा मैं एडवर्टाइजमेंट में डालूं कि मुझे उस सेल से प्रॉफिट आएगा. द इफेक्ट ऑन माई सेल, कोई भी चीज ले लो. Okay, how much things I need to spend, how much amount I need to spend on an advertisement. तो मैं जितना एडवर्टाइजमेंट करूंगी उतना सेल बढ़ेगा. दिस इज व्हाट इज अ रिग्रेशन. Are you understanding this? Yes, no. So basically, ma'am, you mean that the factors one is depend on other, like how much we are advertising. मतलब So हम ये देखेंगे कि जो दो फैक्टर है वो कितने एक दूसरे के रिलेटेड है या नहीं है. सिंपल एग्जांपल. okay, okay, Okay. okay, So basically, regression is nothing. It's a relation between two parameters. okay, ma'am. Okay. Okay. मतलब Yes. एक सिंपल लॉजिक अगर हम बात करें तो लाइक क्या कह सकते हैं और yeah, cells of say books, notebooks, and reopening basically period of your schools and colleges. So that is related. Okay. Two parameters are related. Okay.
जैसे how much amount of money, certain amount of money I should spend on my advertisement so that I will get an increase in sales. It's a related. Okay, ma'am. Okay. Okay. Yes. Okay. So this kind of basically things is nothing. It's coming under the regression analysis, or we can say the regression. Okay. And it is also related with the data analytics. क्योंकि हम जब डेटा एनालिटिक्स करते हैं, मतलब डेटा पे एनालिटिक्स करते हैं, तो हम दो पैरामीटर्स को एनालिसिस ही करते हैं ना, कि ये दो पैरामीटर क्लोज है क्या. एक सिंपल लॉजिक में बताती हूँ. Water level in the basically dams which are built on say rivers like Yamuna, Ganga, or say Brahmaputra is definitely get increase in the summers. Do you know this? Yes, ma'am. It's a very simple logic because it is coming from the Himalayas, it is coming from the glaciers where the temperature increases, water level increases, whereas the dams which are built on Godavari, Narmada, or maybe some other river, okay, which are not coming from Himalaya. So definitely in their summers, their water level decreases because heat is increased. Automatically evaporation ज़्यादा होगा तो उनका पानी तो जा रहा है, सूखना है. Okay. Okay, ma'am. तो such kind of regression analysis we can have it. अब ये सिंपल मैंने बोल दिया, लेकिन जब अगर एक्चुअल रिग्रेशन एनालिसिस ऐसे सिचुएशन में जब अप्लाई होता है ना, तो टेम्परेचर का वेरिएशन, मैक्सिमम मिनिमम, मार्च महीने से लेके जून तक का, ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है. मतलब एक अच्छा खासा डेटा सेट बनता है एंड देन एनालिसिस होता है. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Now it's clear. Then coming to the central tendency. What do you mean by central tendency? Central tendency मतलब किसी भी डेटा का टेंडेंसी. mean mode median, I guess. तो मीन मतलब क्या होता है? What do you mean by mean? Average. Okay, and mode? Most frequent value. Ma'am, like, yeah, the basically it's like the most frequently used value. And what is the median? Ma'am, middle value of the data set. By applying filter first in the ascending or a descending order and then finding out the middle value of that data set is nothing, it's a median, right? Okay. And there are many other statistics approach we will be using on the data analytics. Okay. So if I just relate, okay, कि data analytics और statistics के बीच का relation क्या है? So data analytics is nothing, it's a valuable tool, okay, for businesses aiming to increase revenue. हर कोई यही चाह रहा है ना, कि मैं डेटा एनालिटिक्स करके मुझे कुछ अच्छा डिसीजन मैं ले पाऊं और जिससे मेरा प्रॉफिट हो. दिस इज व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव. सो इंक्रीज रेवेन्यू, or either I can improve the product, okay, or I can retain the customer. So there are so many major things towards your profitability only. आज अगर कोई भी प्रोडक्ट इंप्रूव हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी ही हम इंप्रूव कर रहे हैं. या अगर वी आर रिटेनिंग द कस्टमर, so what we are doing actually, we are towards the profitability only. So डेटा एनालिटिक्स जो हम अप्लाई करते हैं, मतलब किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर मेनली फॉर द profitability. And according to research by Global Management Consulting firm, that is a McKinsey and Company, okay, that use of data analytics are 23 times more likely to outperform competitors in the terms of new customer acquisition than the data driven companies. मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है, मतलब ये जो ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, ओके, मैकिन्से एंड कंपनी, उन्होंने एक रिसर्च किया है कि जो लोग, जो कंपनियां या जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं, उनका 23 टाइम्स आउट परफॉर्मिंग देयर मतलब वो उनके कॉम्पिटिटर से 23 टाइम्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए, इन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स के लिए, रिटेंशन के लिए, एवरीवेयर दे आर 23 times than the companies or competitors who are not using data analysis. Are you clear with that? So
they were also 9 times more likely to surpass them in the measure of customer loyalty as well, okay? And 19 times more likely to achieve above average profitability. So just understand कि data analytics कितना important है किसी भी organization के लिए, okay? And this data analytics we can perform using statistics only. Now, what are the statistical processes? Descriptive analytics, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. अब ये जो है, ये जो एनालिटिक्स लिखा है, ये टाइप ही है, मतलब ये डेटा एनालिटिक्स के ही टाइप है. और ये हम अचीव कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स. अब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है? व्हाट एक्चुअली वी डू. सो फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टेल्स अस व्हाट हैपेंड. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव हमको डिस्क्राइब करना है. सो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन इज देयर, ओके, summaries are there. Okay, so it's mainly for the quantitative data by presenting statistics. Are you clear with this? अगर मुझे ये देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इफ यू जस्ट रीड इट, जो स्लाइड है आपको खुद को समझ में आ जाएगा. Descriptive statistical analysis could show sales distribution across a group of employees and the average sales figure per person, per employee. अगर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, या एक सिंपल एग्जांपल, चलो ये सेल्स का एग्जांपल मत लो, एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का, कि अगर मैं यहाँ पे, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग, बट एवरेजली अगर 8 लोग मेरे बैच में हैं, 8 लोगों को मैं इक्वली पढ़ा रही हूँ, राइट? इन द ऑल द वे आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन. 8 के 8 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, रेगुलरली दे आर अटेंडिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट केयरफुली. और वन फाइन मोमेंट, इफ आई टेक द टेस्ट, उसमें से 8 में से सिर्फ 5 लोगों को ही अच्छा परफॉर्मेंस आता है, 3 लोग नहीं कर पाते हैं. सो व्हाई? दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. क्लियर? तो फिर व्हाई में आता है, वो सिर्फ ज्वाइन कर लेते थे क्योंकि उनके मम्मी पापा ने उनको क्लास लगा दी थी. पॉइंट नंबर 1. वो सिर्फ ज्वाइन कर लेते थे क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि हम कर लेंगे, लेकिन ओवर द टाइम उनको इंटरेस्ट नहीं बना. पॉइंट नंबर 2. थर्ड, दे मे डोंट हैव अ गुड नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो उनको कनेक्टिविटी नहीं बनता था. पॉइंट नंबर 3, उनको शायद ट्रेनर अच्छा नहीं लगा. पॉइंट नंबर 4, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉइंट नंबर 5, वो प्रिपेयर ही नहीं थे. They had not undergo with the recording session, they had not done the basically assignments, they had not done the homework, they had not done the studies. तो ये सारी चीजें आती है डिस्क्रिप्टिव में. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Okay, so this way the descriptive analytics can be done for that 3 students who attended but they had not performed well. So this kind of things, descriptive analytics मतलब जहाँ पे हमारे को पूरी बैकग्राउंड स्टोरी पता है और हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या हुआ भाई, क्यों पढ़ाई नहीं हुई, क्या हुआ, क्यों परफॉर्म नहीं किया, लाइक दैट इट इज. ओके, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स? डायग्नोस्टिक मतलब क्या? डायग्नोस्टिक इज अ प्रोसेस, ओके, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं. डायग्नोस्टिक, आप आपने कभी देखा होगा डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम हमारे ब्लड सैंपल देते हैं. ओके, वी गिव द ब्लड यूरिन सैंपल टू डायग्नोस्टिक कि भाई क्या डिसीज हो गया है, हमको वायरल हो गया है कि चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, व्हाटएवर इट मे बी, बिकॉज दीज आर ओनली द डिसीजेस नाउ अ डेज ट्रेंडिंग, राइट? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यही सारी चीजें हो रही है. तो डायग्नोस्टिक हो रहा है, मतलब उनके सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है कि ब्लड टेस्ट करवाओ. एंड देन द डायग्नोस्टिक सेंटर एनालाइज कि इनके क्या क्या ब्लड के सिम्टम्स है जो चिकनगुनिया के पेशेंट्स को मैच खाते हैं, या डेंगू के पेशेंट्स को मैच खाते हैं, या मलेरिया के पेशेंट्स को मैच खाते हैं. सो दैट इज अ डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. ओके, ये सारी चीजें हो सकता है, these are all statistical terms, हम सिर्फ आज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. सो शायद यू माइट बी लाइक कि ये सब चीजें कैसी होगी. वी विल बी गोइंग टू डू दिस ऑल इन द वे लाइक दिस. ये हम एनालिसिस करेंगे डेटा सेट पे. ओके, ये जो इमेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने मेरे ही लैपटॉप पे एक्सेल पे काम करके निकाली हुई इमेजेस है. एंड वी विल बी डूइंग ऑल दिस वे by applying all these things from the statistics. और ये सारी चीजें हम करेंगे where we are going to do in the Excel, and how we are going to do using the statistical functions, and where these functions are, these are in the Excel. And what are these functions जो हम बात कर रहे हैं अभी.
Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so we will stop here today. Okay, we will continue from the next class from this analytics, and then we are going forward towards a practical use of this analytics. Okay. Okay. Yes, Fine, ma'am. everyone. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, so I'm just Thank you, ma'am. sharing my screen. We will connect again in the next class and we will continue with the topic and we will see all the statistical approach using certain sample data set in the Excel. Okay, Okay. fine. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.